अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन। ये मुझे चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स इन कंप्यूटिंग इन जनरल। आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट इन एफर्ट टू मेक इट less boring for you guys. I hope I am able to succeed in doing that abhi bhi. So communication. So when we're talking about communication na, in this chapter at least, we're kind of restricting ourselves to the internet. ठीक है, communication over the internet. So you know, network communication. तो अब हम देखते हैं कि the internet is everywhere. From Zoom, the medium of which is the medium of our class, to WhatsApp, Uber, Facebook, you name it. Our lives have become so much dependent on the internet, especially post-COVID, but in general as well. Hard to explain the internet to someone, but it's very easy to, like, you know, give examples of what the internet is, perhaps. Having said that, we can see that, you know, these are vastly, you know, different applications. They are like stark opposites. मतलब स्नैपचैट और ऊबर में कुछ कॉमन नहीं है फेस वैल्यू पे, राइट? और परहैप्स ऊबर और नेटफ्लिक्स में दूर दूर तक कोई आपस में ताल्लुक नहीं है. गूगल सर्च वर्सेस व्हाट्सएप आर टू completely different applications. So it's really mind-boggling and it's really stunning to see how all these immensely different applications are running together on the internet. So, but how are these apps architectured? ठीक है, ever think about the fact कि वही अब इन apps ने इतनी different चीज़ें leverage करनी है, ठीक है? Part of these apps is being run remotely, part of these apps is being run locally on your systems, and then there's also the fact कि you know, हर app की requirement different है. मसलन when you're talking about WhatsApp, so you want instantaneous message delivery. Now this is very different from perhaps Instagram, which would want fast search, but not as fast search as Google. But then they could take some time to, you know, provide to you the highest quality of video that can be achieved given your bandwidth, right? So you see, these are very different requirements of every application. So how does this happen? How does the internet, which seems like a black box, be able to do all this? रिमोट सर्विसेज आर सर्विसेज जो बेसिकली हमारे पास लोकली डिवाइस पर ही चल रही होती, राइट? सो दे आर काइंड ऑफ अकिन टू क्लाउड सर्विसेज. मतलब जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक का वी ऑल नो ना कि मतलब फेसबुक विल हैव देयर सर्वर सेंटर्स जहाँ पर फेसबुक काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही होगी, और हमारे मोबाइल पे तो बिल्कुल एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन रन कर रहे हैं ना. वो मेन काम तो सारा फेसबुक का पीछे किसी बड़े से जाइगेंटिक सर्वर में हो रहा होगा. तो ये रिमोट एप्लीकेशंस होती हैं. अच्छा, बट वही फिर वी सर्कल बैक टू द सेम क्वेश्चन, बट व्हाट इज द इंटरनेट, राइट? अभी तक आई हैव बीन गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ, यू नो, ओह द इंटरनेट कैन इज परहैप्स, you know, WhatsApp is part of the internet, Netflix is part of the internet, but internet in itself है क्या? तो there is this clip that I show to my students, ठीक है? आप लोग तो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो it's nice. तो आएंगे, एक छोटा सा 2 मिनट का क्लिप है, ये देखते हैं and then we'll start studying, ठीक है? This is from a show called What is it? This, Jen, is the internet. What? That's right. This is the internet. The whole internet. Yep. I asked for a loan of it so that you could use it in your speech. It's so small. That's one of the surprising things about it. Hang on. It doesn't have any wires or anything. It's wireless. Oh yes, everything's wireless nowadays, isn't it? So I can really use it in my speech. What if someone needs it? Oh, no. People will still be able to go online and everything. It'll still work. Oh, good. I tell you, you present this to the shareholders and you will get quite a response. Can I touch it? Ooh. It's so light. Of course it is, Jen. The internet doesn't weigh anything. No, of course it doesn't. Hey! What is Jen doing with the internet? Ma said I could use it for my speech. Are you insane? What if she drops it? I won't drop it. I'll look after it. No, Jen. No, this needs to go straight back to Big Ben. Big Ben?
Yeah, it goes on top of Big Ben. That's where you get the best reception. Roy, I promise I won't let anything happen to it. No, Jen, I'm sorry, but the elders of the internet would never stand for it. No, Roy, I spoke to the elders of the internet not 1 hour ago. I told them about Jen winning Employee of the Month, and they were so impressed that they wanted to do whatever they could to help. Wait a minute. The elders of the internet. The elders of the internet know who I am. You've got to let me have No, Jen, I'm sorry, it's just too risky. it. Oh, please, Roy. Oh, well, Moss, has it been completely demagnetized? By Stephen Hawking himself. Who sent his congratulations, by the way. Well, if it's okay with the hawk, So, can I have it? you can. Oh, don't forget your speech. Oh, thank you. Slowly. तो ये एक छोटा सा obviously this was a comedic take on what the internet is, but yeah, essentially हाँ थोड़ा सा lighter mood set करने के लिए. I hope you guys enjoyed it. It's a good show. I actually ended up watching this show after my professor showed this clip to me, and it's a decent show. तो खैर, the lords of the internet have now commanded me to teach you guys. So here we go. आ जाए actual पढ़ाई पे आ जाए. So the internet has over 4.8 billion users. ठीक है, और ये last year के statistics हैं तो probably और बढ़ गए होंगे. ठीक है, with over 30 billion devices worldwide. ठीक है, so that's like an insane amount of devices. It has transformed everything, how we do business, connect with one another, the way we learn. But in its core value, the internet is a medium of communication, right? अगर हम थोड़ा सा डिस्टिल करें, हम सारा फैंसी ग्लिटरी शिबरी चीज़ें रिमूव करें, तो वी सी कि इंटरनेट इन इट्स कोर क्या है? इट्स अ वे टू कम्युनिकेट. अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट एड्स अस इन कम्युनिकेटिंग, उससे पहले इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू sort of like reflect on how humans communicate, right? मतलब अगर हम एक टेक्नोलॉजी को समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले हम ये सीखें कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एंड देन सी के व्हाट सिमिलैरिटीज फ्रॉम आवर कम्युनिकेशन इज मैप्ड ऑन टू द इंटरनेट परहैप्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो हाउ डू ह्यूमंस कम्युनिकेट? आई लीव द फ्लोर ओपन टू यू गाइज. मुझे बताएं, आप किसी से बात कर रहे हैं, अगले बंदे को वो बात कैसे समझ आती है, कैसे समझ नहीं आती? हाउ डू ह्यूमंस कम्युनिकेट? बाय टॉकिंग. ठीक है, हाउ डू वी टॉक? उससे भी पहले, डू वी कम्युनिकेट ओनली यूजिंग टॉकिंग? सो टॉकिंग हो गया, बिल्कुल ठीक है, बट क्या सिर्फ टॉकिंग? नहीं. ठीक है, साइन लैंग्वेज भी है. सी, सो नाउ देयर इज ऑलरेडी थिंग्स दैट यू डिडंट इनिशियली थिंक ऑफ. ठीक है, टाइपिंग, perhaps yes, typing is also valid. Typing. तो अब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं क्या? we decide our medium of communication. ठीक है, कि क्या हम using audio communicate करेंगे, या साइन लैंग्वेज है तो essentially using visuals communicate करेंगे. टाइपिंग भी है तो it's a kind of visuals, right? So अब भी हम audio और visuals में आ गए. Perhaps people can communicate यूजिंग सेंसरी मीडियम्स. आई डोंट नो, वो आप करते नहीं हो, किसी की कमर पे कुछ लिखते नहीं, लाइक ओ गेस करो मैंने क्या अल्फाबेट लिखा है. सो परहैप्स मॉर्स कोड है जिस तरह से यू कैन टैप ऑन समवन्स बॉडी एंड से कि ओ अच्छा मैं जो हूँ, मैं यूजिंग देयर सेंस ऑफ टच कम्युनिकेट कर रहा हूँ. बट अब चलें, नाउ लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू वन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू टॉकिंग एंड टॉक अबाउट टॉकिंग कैसे होती है. नाउ आई एम टीचिंग यू, राइट, यूजिंग आवर माउथ. परफेक्ट. हाँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, ऐसे बिल्कुल मुझे अपना स्टंट पुल ऑफ करने दें. अना अलन अतवस्सुल बिलगतुल अरबिया वानत ला तफमुहा. डिड यू गाइस गेट दैट? हाँ, ठीक है, बट जनरली यू डिडंट गेट दैट. व्हाई? बिकॉज आई वाज स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज व्हिच यू डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट? So it's important for us to
have an agreement on the language that we're going to use, okay? So we're all comfortable in Urdu and English, right? So what if I start talking to you like this? Will you still be able to understand what I'm saying? And what if I deliver all my lectures like this? Will you be happy if I start teaching you like this? Sahi hai? So do you get it? You don't get it. That's the point. You don't get it. So we also need to, and on the other end of the spectrum, if I continue speaking like this, तो तुम लोग probably भूल जाओगे मेरा जुमला ख़त्म होने से पहले कि what was the point that I was trying to make, right? तो दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि it's also important to perhaps have an agreement on the speed of communication, right? So these are just two examples off the top of my mind, but we see how there are a lot of things which, because हमारे social contract का एक part बन गया है, हमारे social contract cultural norms का एक part बन गया है कि कोई भी बंदा इतना slow या इतना तेज़ नहीं बोलेगा, slash people try to use the regional language or English, which is like the universal language, so it's easy for us to communicate, ठीक है? All this makes it easy for us to communicate with one another. अगर ना होता ये एक अनसेट अग्रीमेंट है, बट एक अग्रीमेंट कहीं ना कहीं लाई करता है ये वाला, सही है? सो सम ऑफ द थिंग्स अगेन वही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रेल, रिटन, हाँ ब्रेल, टच, ब्रेल इज टच, अ लैंग्वेज दैट बोथ parties in the communication can understand, the speed that is needed, too slow or too fast, सही है? So ये मैंने बता ही दिया सब कुछ हमने, we just covered all this. तो we see कि this अब humans की communication में ना ये दो तीन चीज़ें हैं बड़ी pivotal. So just like humans, the internet protocol also has a set of rules for successful transmission and receipt of data, right? जिस तरह हमारे set of rules हैं for me successfully speaking, वो तुम लोगों ने देखा था कि जब मैं बहुत तेज़ बोल रहा था तो even I wasn't able to keep up with my own pace because it's hard, even though I had the sentences in my mind, it's hard to speak at a very fast pace. तो successful transmission and receipt of data दोनों को ensure करने के लिए it's necessary कि we have a set of rules that we agree upon and that we follow. So we need a protocol to provide a set of standards for transmission of data, and then we need a globally accepted set of rules for transmitting and receiving data. अच्छा, अभी globally accepted बहुत ज़रूरी बात है. क्यों? क्योंकि there is this liberty in languages which the internet does not really have. So if I go to France today or Germany today, perhaps a country which is जहाँ पर English बहुत ज़्यादा लोग बोलना नहीं prefer करते, and they don't even engage with you if you don't know their local language. Let me think of I don't know, Armenia चले जाओ, किसी भी ऐसी जगह चले जाओ, Latin America में, मेक्सिको चले जाएं हम, ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको नहीं मिलेंगे, एंड मुझे वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है. अब कंडीशन क्या है कि आई वोंट फाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन एंड आई डोंट नो द नेटिव लैंग्वेज, तो आई कैन स्टिल मेक यूज ऑफ sign language perhaps to explain what I am trying to say, right? Like if I need something to drink, I can be like and then obviously I'll have to tell them that I don't need whiskey, I need water, but to some extent I will be able to communicate khana, pani, I can do something. The internet has no alternates. Sending a message from Pakistan all the way to the US or all the way to the Latin American countries or wherever you're sending a message, the internet needs to make sure कि आपने जो message भेजा है वो recipient तक जाए. उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है ना वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो. सो एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर कंफर्टेबल विद हाउ द इंटरनेट इज ट्रांसमिटिंग डेटा, एंड देन दे also need to enable communication between different platforms, right? Mac or Windows, for instance, mobiles and laptops and TVs and fridges have internet. Up to printers, fridges, you name a thing, Internet of Things has put an internet in that. Kapde, we have Wi-Fi connected clothes. It's been a while now, it's not something new. So इतनी different चीज़ें हैं, right? और उन सबको इंटरनेट से कंट्रोल करना है. So it's really important for us to be able to have a set of rules that is agreed upon between multiple different platforms as well. वही globally accepted वाली बात.
So there are two versions of IP. Essentially, there are two versions of IP, and they're backward compatible. So IPv4 or IPv6 है. So a device using IPv6 can also cater to IPv4 क्योंकि you can't, you know, put something out of the internet. And both these versions के अंदर जो laws हैं, the rules of communication, they are set in stone. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि ओ अच्छा चलो V4A IPv4B. नो, पूरी दुनिया में इस वक्त essentially सिर्फ दो protocols of communication follow हो रहे हैं, IPv4 और IPv6, और वो दोनों भी आपस में compatible हैं. Unless, you know, you have a private network and you have your own rules and regulations, but then that doesn't count. So do you guys understand इस बात की importance क्या है? Why do we need to have these set in stone protocols? So these are protocols. Public IP, private IP is just a protocol in it. Set in stone. Set in stone का मतलब है कि like, you know, they're fixed and they can't be changed. If something is set in stone, तो like obviously you can't erase it, right? तो वो ये मतलब होता है set in stone का. So how is data transmitted over the internet? सही है. Let's get to the interesting bit. So just like we use letters. अच्छा, यहाँ पर मैं किस letter की बात कर रहा हूँ? खत. Postal letters. Just like we have letters in our real world to communicate between people who are far away, we have packets in the digital world. अच्छा, अब मैं ना आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल्स ड्रॉ करूँगा लेटर्स और पैकेट्स के दरमियान, तो आपको पैकेट्स बेहतर समझ आएंगे. सो अ पैकेट इज़ अ फिक्स साइज्ड बैग ऑफ बिट्स. बिट्स क्या होते हैं ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट? वी स्टडीड बिट्स इन AS and we generally know कि बिट्स आर हाउ we digitally represent any information. So packets are fixed sized bags of bits. What do they have? They have a header. Header क्या होता है? Header is meaningful to the network. It stores the and the data that a header stores is as follows. ठीक है? So the header stores the IP address of the sender, of the and of the destination, the IP version being used, the protocol being used, the total number of packets that are being sent in this communication stream, the packet's length, the time to live, मतलब इतनी देर बाद इस पैकेट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, and the source destination and ports. ठीक है? कि source वही मतलब so essentially अगर हम इसको compare करें लेटर से, तो you can say कि sender का एड्रेस, recipient का एड्रेस, और ये लिखा हुआ है कि मसलन अब पैकेट क्योंकि एक फिक्स साइज बैग ऑफ बिट्स है, तो what that means is समझ लो कि you are restricted to one page worth of letter. अगर आपने ज़्यादा लंबी बात करनी है तो आप obviously 10 letters भेज दोगे, तो फिर आप नंबर भी करोगे, right? So you'll be like 1 out of 10, 2 out of 10, 3 out of 10. इसी तरह पैकेट्स में number of packets होता है, and ID of packet which is often known as sequence number. These are interchangeable-ish. And then we have the length of the packet, वही पैकेट का साइज क्या है, इस तरह की सारी डिटेल्स जो बेसिकली आपका नेटवर्क आपका पोस्टमैन है. ठीक है? योर नेटवर्क से पोस्टमैन आपका डाकी है, तो आपके पोस्टमैन ने जो जो इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज करनी है ना, वो सारी एक पैकेट के हेडर में होती है. एंड देन कम्स द बॉडी. वेल द बॉडी हैज़ द डेटा दैट इज मीनिंगफुल ओनली टू द एप्लीकेशन. सो अब इसमें आपका एक्चुअल जो कंटेंट है ना वो आता है जो आपने लेटर के अंदर लिखना है. एंड दिस इज हाउ पैकेट्स जनरली ट्रैवल. सो दे ट्रैवल यू नो इन अ स्ट्रेट लाइन. So now I would like to leave you guys with a question. Think of the entire protocol that can be used to send 50 packets from A to B and 50 packets from Z to G. ठीक है? So same path है हमारे पास. ठीक है? मैं सवाल outline कर देता हूँ. ठीक है? So we have the same path. So यही path follow करना है. ठीक है? Imagine ये paths exist ही नहीं करते. ठीक है? करते भी होंगे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट खैर इमेजिन यही एक पाथ है हमारे पास. एट द सेम टाइम A says कि oh I want to send 50 packets to B and Z says I want to send 50 packets to G. By tomorrow you guys should have 2 different strategies to do this. ठीक है? Think about it. I am giving you an entire day. Brainstorm करें. इशू ये है कि A ने B को 50 पैकेट भेजने हैं, Z ने G को 50 पैकेट भेजने एट द सेम टाइम. अगर वो सेम वक्त पे पैकेट्स भेजेंगे तो कोलिजन हो जाएगा. ठीक है? अगर वो सेम वक्त पे पैकेट्स भेजेंगे तो आपस में पैकेट्स की टक्कर हो जाएगी. इट्स जस्ट लाइक अ सिंगल लेन हाईवे. ठीक है?
इट्स जस्ट लाइक अ सिंगल लेन हाईवे। तो अब वो कैसे करेंगे, ये आप लोगों को सोचने का काम, ठीक है।